औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर हमारा होने लगा है लियाकत अली ख़ान का है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रिक्वेस्ट है कि न्यू चैनल है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लियाकत अली खान was an eloquent orator, discuss। इसका आंसर है, लियाकत अली खान was the first Prime Minister of Pakistan on visit to USA. He addressed the Americans in the University of Kansas, America. Liaquat Ali Khan's speech was really an excellent speech, as he pointed out all the important issues and problems which the underdeveloped countries are facing. Above all, he justified the demand of separate homeland in front of international community excellently to win their favor. He provided every logically and reminded the Americans of their own days of freedom. He indicated the resemblance between the early days of America and those of Pakistan. He talked about the circumstances which led to the creation of Pakistan and eloquently justified the importance it for the peace of Asia. He told about the great problem faced by Pakistan after creation. The leading problems were understand share of military equipment, lack of skilled personnel, and accommodation to 7 million homeless refugees. In his speech, he demanded the help of Western countries. He expected from the Western countries to play their role for the progress of Asian countries, especially of Pakistan. In short, we can say that in Pakistan and the modern world, Liaquat Ali Khan has proved himself an excellent orator. तो फ्रेंड, ये था आज का लेक्चर। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो भी मेरा लेक्चर देखते हैं, क्योंकि टाइम अब कम रह गया है, तो स्टार्टिंग से मेरे सारे लेक्चर देखें और सिर्फ वही प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।